NewsX is bringing to you an exclusive ground report from Baramulla in Jammu and Kashmir. We interviewed 3 former Stone-Pelters whose lives have now been completely transformed after the abrogation of Article 370. They speak of how they were clueless as to why they were pelting stones as children. Their environment was filled with violence and hate and propaganda. Now they earn their own livelihoods and live in peace. We will listen to their words. We will also speak to some people who understand this transformation and have seen both the sides. Dr. S.P. Vaid, former DGP Jammu and Kashmir, is with us on the program. Also joining us is Darkshan Andrani, Chairman Jammu and Kashmir Waqf Board, is with us on the show. But before we start talking to them, we're going to listen in to these conversations that we had. जम्मू कश्मीर में हवाओं ने अपना रुख बदल दिया है। हम इस वक्त जहां पर आए हैं ये उत्तरी कश्मीर का बारामूला टाउन है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सीमेंट पुल है। यहां पर स्थानीय लोग इसे सीमेंट पुल के नाम से जानते हैं। ये पुल कई लिहाज से मशहूर रहा है क्योंकि अगर हम साल 2008 की बात करें या 2016 की बात करें तो इस पुल पर स्थानीय नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव करते थे। बिल्कुल इस साइड से स्थानीय नौजवान आते थे जो बिल्कुल इसी पुल पर दिन भर लगे रहते थे और इस साइड की अगर हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, इस साइड से मेरे वीजे आपको दिखाएंगे कि इस साइड यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ लगी रहती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस के नफरी लगे रहते थे जिनमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार दिन भर रहते थे और यहाँ पर दिन भर जो है स्टोन पेल्टिंग इसी पुल पर जारी रहती थी। जुमे का दिन आज है और जब आज से कुछ साल पहले की बात करें, आज से कुछ साल पहले जुमा नमाज अदा की जाती थी, बाद भर दिन भर यहां पर स्टोन पेल्टिंग चलती रहती थी। ये पुल जो है अब एक अलग ही मिसाल कायम कर रहा है क्योंकि अगर हम रात की तस्वीर आपको इस पुल की दिखाएंगे, ये पुल जो है तिरंगे के साथ लिपटा हुआ है। यहाँ पर नई लाइट्स इंस्टॉल की गई है जो कि तिरंगे की लाइट्स है और खूबसूरत नज़र। आज यहाँ पर कोई नौजवान स्टोन पेल्टिंग नहीं करना चाहता। आज यहाँ पर नौजवान जो है मुख्य धारा में आना चाहते हैं। इसी हवाले से आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। जिस नौजवान के साथ हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, साल 2008 हो या 2016 हो, यहाँ के नौजवान और पूरे बारामूला के नौजवान इसे छोटा गिलानी के नाम से जानते थे। लेकिन तब्दीली कैसे आई? छोटा गिलानी एक स्कूल टीचर 2019 के बाद कैसे बना? आज हम छोटे गिलानी यानी मुदस्सिर से बात करेंगे। मुदस्सिर, आज आपको बुरा तो नहीं लग रहा है हम आपको छोटा गिलानी कहे कि मुदस्सिर कहे? बिल्कुल, अभी अगर आप मुझे शेख मुदस्सिर के नाम से पुकारें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गिलानी आपको आज अच्छा नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। वजह क्या है इस चीज़ के पीछे? वजह है इस चीज़ के पीछे कि अगर आप कोई आइकन बनते हो इंसानियत के तो अगर आपको उस चीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके बरक्स अगर आपको किसी नेगेटिव चीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो चीज़ कोई भी सूट उसमें किसी को कोई भी उसमें सूटेबल नहीं रहेगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। कंफर्टेबल मुदस्सिर से आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह इन्होंने स्टोन पेल्टिंग को तरजीह दी, क्या इनके दिमाग में था और कब इनके दिमाग में आया कि मैं स्टोन पेल्टिंग करूं यानी फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंकूं। शुरुआत कैसे हुई? किस तरह आपने दिमाग में ये लाया कि मैं स्टोन पेल्टिंग करूं और बाद में मुझे शायद कोई क्या पैसा मिलता था? सच बताइए। नहीं, मैं अगर बात करूं तो पैसा मिलने वाली कोई बात नहीं थी। मैं जो कुछ चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये था कि सबसे पहले चीज़ ये कि यहाँ का जो इकोसिस्टम बन चुका था, जिस इकोसिस्टम की वजह से जो यहाँ का यूथ है वो जो बाहर निकलता था और वो जो सड़कों पे आता था, वो न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ें आपको मिलती थी, वायलेंस की मैसेज होती थी। चाहे स्ट्राइक्स की बात करें, चाहे कॉल्स की बात करें जो हुर्रियत की तरफ आती थी, जो कॉल्स की बात आती थी। जब आप ऐसे इकोसिस्टम में रहते हैं ओबियसली आपके जो दिमाग में जो कंटेंट्स और जो थॉट्स वैसे ही टाइप के आते हैं। मुतासिर थे लोगों के दिमाग, अगर हम नौजवानों के दिमागों की बात करें तो वो खाली थे और उन पर टारगेट करना आसान बात थी। यहाँ पर सेपरेटिस्ट की बात करें या मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की बात करें। मुदस्सिर, ये तब्दीली आपने कब देखी? तब्दीली कब आप में आई? चेंज कब आई? देखिए, जनरली मैं अगर आपको बताऊं 2019 के बाद जो ह्यूमन लाइव्स थे
इससे पहले अगर हम बात करें 2019 से पहले की बात करें तो जब मैं कोई न्यूज़पेपर उठाता था, जब मैं कोई न्यूज़ सुनता था तो आए दिन ये देखने को मिलता था, ये सुनने को मिलता था कि यहाँ पे इतने लड़के मर गए, यहाँ पे इतने लड़के शहीद हो गए। तो ये चीज़ें वो 2019 के बाद ये चीज़ें अब्रप्टली चेंज हो गई। सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट को का रोल रहा हो, सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है वो ह्यूमन लाइफ, जो एक आम कश्मीरी जिसकी जान चली जाती थी उसकी जान बच रही है। और उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स थे उनमें अकाउंटेबिलिटी आई, चाहे एजुकेशन है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, चाहे डेवलपमेंट की आप बात करें, तो ये सारी चीज़ें ग्रो होना शुरू की। और बहुत अच्छे सेफ्टी मेजर्स थे जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से 2019 के बाद उठे, जिन्होंने एब्सोल्युटली इस चीज़ को कवर किया और वो मेजर्स उठाए जिससे एक इंसानी जानों का जो इतलाफ होता था वो बच गया। एक ट्रेंड बन चुका था, वो ये ट्रेंड था कि जुम्मा के दिन अमूमन स्ट्राइक की कॉल रहती थी या एजिटेशन की कॉल या प्रोटेस्ट की कॉल रहती थी। और एक कॉमन यूथ का ये नज़रिया था कि वो इस हॉलीडे फ्राइडे को एज हॉलीडे एंजॉय करे। हॉलीडे एंजॉय करते थे स्टोन पेल्टिंग? बिल्कुल, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं था। आप मुझे बताएं कि स्टोन पेल्टिंग का कौन सा सेंस है? जिस हिसाब से शेख मुदस्सिर का कहना है कि यहाँ पर हालातों ने जिस हिसाब से 2019 के बाद करवट ली है, यानी हालात कश्मीर के बदल चुके हैं। पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो एक एक नौजवान यहाँ पर यही चाहता है कि अमन सुकून की ज़िंदगी गुजारे। ये पुल जो है काफ़ी मशहूर हुआ करता था, स्टोन पेल्टिंग हो या कोई भी जो देश मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं उनके रिलेटेड। लेकिन आज यहाँ पर शांति बनी हुई है, आज भी जुमे का दिन है, आज भी लोग जुमे की नमाज पढ़ने के बाद अपने कारोबार के साथ वाबस्ता है। एक और मुकामी नौजवान से हम बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने साल 2008 हो या 16 हो, ये दोनों वो दौर देखे हैं जब यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग होती थी और आज किस तरह से ये अपने कारोबार के साथ वाबस्ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बारामूला के टाउन में इन्होंने किस तरह से ये रेड़ा लगाया जहाँ पर ये सब्जियाँ बेचते हैं। कयूम, आपसे जानना चाहूँगा क्या दौर था वो और किस तरह शुरुआत हुई? आप भी स्टोन पेल्टिंग करते थे, लेकिन कैसे आप में ये चेंज आई, ये तब्दीली आई? आप भी जेल गए, क्या कुछ देखा आपने इस दौरान? इस दौरान मैंने 2008 से हमने यहाँ देखा, यहाँ की हालत ठीक नहीं लगी थी। यहाँ लोग निकलते थे, मस्जिदों में जाते थे फिर नमाज पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद जल्द से जुलूस से निकलता था, फिर फौज पे या पुलिस पे पत्थर मारते थे। यहाँ की हालत बहुत बिगड़ गई थी, हमें खुद भी पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। हम उस टाइम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं था। फिर जब हम जेल गए, हमने जेल देखा, पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया, फिर हम जेल गए, वहाँ देखा, हम पागल हो गए। वहाँ हमने सोचा हम किस लिए यहाँ इस जेल में बैठे हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, हम क्यों नहीं फ़ायदा उठाएंगे। फिर हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया, फिर हम बाहर निकले। जब हमें पुलिस ने रिलीज़ किया फिर हम बाहर आए, फिर हम अपने काम से रखे, बहुत अच्छे तरीके से काम करते रहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल, आज जो गवर्नमेंट की तरफ से काम किया जा रहा है, नौजवानों को खुली छूट दी जा रही है, आज यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, आज यहाँ पर हालात ख़राब नहीं है। तो जब आप जेल गए तो उस दौरान आपके फैमिली में कोई जाता था, किसी ने आपकी फैमिली के बारे में पूछा? ना, ऐसा कुछ नहीं। घर वाले बहुत परेशान होती थी, माँ भी, अपनी बीवी भी, बच्चे भी, कोई नहीं आता था। बस हम गरीबों पर जुल्म होता था, हमें खुद भी पता नहीं क्यों करवा रहे थे यहाँ की हालत ही ख़राब। आज यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत सब अपने अपने काम से लगे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। गवर्नमेंट अपने अपने काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बड़े बड़े पुल बनाए, यहाँ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सारे बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो हालात यहाँ पर ख़राब किए जाते थे, मकसद क्या था? मतलब आप भी स्टोन पेल्टिंग करते थे, आपके दिमाग में क्या था तब? दिमाग में क्या चीज़ आई थी कि मैं स्टोन पेल्टिंग करूँ? तब की बात मैं करता हूँ। उस टाइम मेरी दिमाग ख़राब हो गई थी, आज मेरा दिमाग सही है, क्योंकि उस टाइम मुझे खुद पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं जेल गया मुझे समझ आ गई मैं जेल में क्यों, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, मैं क्यों जेल में हूँ। आज मुझे लगा नहीं, आज मैं बहुत अच्छे तरीके से अपना कारोबार चला रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों को पाल रहा हूँ, अपनी माँ को, बहन को, भाइयों को, सब अच्छा लग रहा है आज। बिल्कुल। कोई आखिर पर आपसे जानना चाहूँगा, कितने FIRs आप पर लगे हैं और कितनी बार आपने, मैंने सुना है कि आपने PSA भी काटा, यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कितनी बार आपने काटा है और FIRs कितनी हैं आपके ऊपर? मैंने दो सेफ्टी एक्ट निकाले। अच्छा, 2 PSAs आपने जी, निकाले। और कम से कम मैंने 5-6 साल जेल निकाले। तो FIRs कितने हैं टोटल आप पर? हाँ, 30 से 30 होंगे। 30 FIRs। बिल्कुल। आज आपका जहन बिल्कुल चेंज हो गया, आज आप उस चीज़ के साथ नहीं है? ना, मैं अपने काम से काम रखता हूँ।
मुझे अच्छा लगता है, मैं काम कर रहा हूँ, घर वाले भी खुश, लोग भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, सब खुशी नज़र आ रहा है यहाँ। बिल्कुल तमाम तर लोग कयूम से सारे खुश है क्योंकि आज दौर जो है बदला हुआ है। कश्मीर के हालातों में सुधार देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है। आज यहाँ का नौजवान जो है मुख्य धारा में आ चुका है। एक एक करके हम कश्मीर के युवाओं का असली चेहरा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नौजवानों का जहन अब तब्दील हो गया है, अब चेंज हो गया है। एक और मुकामी नौजवान हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। 2008 की जब बात आती है तो 2008 में ये हार्डकोर स्टोन पेल्टर हुआ करते थे, लेकिन जब इनको लगा कि सही क्या है गलत क्या है, इन्होंने फैसला किया कि गलत चीज़ को तर्क किया जाए, सही रास्ते को पकड़ा जाए। मुदस्सिर, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या जहन में था जब स्टोन पेल्टिंग की जाती थी? पहले जो निकलते थे लोग, हम भी निकलते थे। उस टाइम हम छोटे थे तो हम भी कोई मरता था पथरा, हम भी करते थे उस टाइम। उसके बाद हमें सारा कुछ समझ आ गया। पीएसए भी काटा हमने, फिर 2009 में पीएसए हो गया। फिर हमने चाहा कि हम सुधर जाए, फिर हम सुधरे। मगर बदकिस्मती से ऐसे नाम जो लगा था पहली बार, फिर लेते थे हमें फिर बुलाने के लिए। बिल्कुल मुदस्सिर, आपसे जानना चाहूँ, कहीं ना कहीं आप में अब ये एहसास हो चुका है कि सही क्या है गलत क्या। वो दौर गलत था, आज का दौर सही है। जी, आज का दौर तो सही है। तो उस टाइम हम छोटे थे, दिमाग नहीं काम कर रहा था उस टाइम। तो सब करते थे पतरा, हमें मत पता था इतना सारा कुछ हो जाता, क्योंकि हमने छोड़ा है ये काम। छोड़ा है, ये काम आपने छोड़ा। आज आप फ्रीली घूम रहे हैं। क्या काम करते हैं आज के? मैं करता हूँ यहाँ मार्केट में करता हूँ, मैं क्रॉकरी का काम रेडे पे। का काम जी करते हैं आप। तो जो आप सोच रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग होती थी, जुमा के दिन ज़्यादातर बोला जा रहा है कि ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी, तो किस तरह दिन की शुरुआत यहाँ पर होती थी? पहले जब जुमा नमाज पढ़ जाती थी तो हम निकल जाते थे बाहर। तो जो ही कोई पत्थर मारता है, एक पत्थर मारता था, सभी मार जाते थे पत्थर। उस टाइम छोटे थे हम, दिमाग काम नहीं करता था। उस टाइम सभी आते थे तो मारते थे पत्थर। बिल्कुल मुदस्सिर हमारे साथ बात कर, जो कि यहाँ के मुकामी नौजवान है, स्थानीय नौजवान है। मुदस्सिर के मुताबिक जब यहाँ पर हुजूम निकलता था, जुमे की नमाज जब होती थी, उसके बाद यहाँ पर इन्हीं पुलों पर जो है हुजूम इकट्ठा हुआ करता था और बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया जाता था। लेकिन आज किस तरह से मुदस्सिर जैसे और कई सारे नौजवान हैं जिनके जहन जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। Right, Mr. Kavinder Gupta, former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, also with us on the program. Mr. Kavinder Gupta, I hope you can hear me, sir. Thank you for speaking with NewsX. Yeah. Mr. Gupta, are you there with us? Yeah. Right. So first up, what do you make of these reactions? You know, these people are obviously transformed and chastised men. You know, regardless of what happened in the past, they are very, very happy. With the kind of environment that is being given to them, and how their safety and security has also blossomed in the last few years is something to be commended over. And they've praised the government. They themselves do not recognize and realize the people they were when they were in fact pelting all these stones under the influence of obviously proxies of Pakistan. देखिए, हमें ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत से ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे जो कि पाकिस्तान से पैसा लेकर के यहाँ पर इन लोगों को गुमराह करते थे। तो सरकारों की भी कभी विल नहीं रही, इच्छा शक्ति नहीं रही कि वो इसको सुधारते। कुछ राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक दुकानदारी इसी हिसाब से चल रही थी कि कश्मीर के हालात खराब रहे और सेंटर हमसे बात करे। उनकी हमेशा से यही इच्छा रही थी। लेकिन पिछले 30 साल का हम देखें, जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने यही देखा, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी जो कि कभी मिलने वाली नहीं थी। लोगों को गुमराह किया गया और राजनीतिक पार्टियां भी अपने कारकुन बना करके उनको यूज करती थी और उनके घरों को तबाह करती थी। नौजवानों को हमेशा से ये कहा गया कि हम आपको आज़ादी दिलाएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था। और खास करके जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें हुर्रियत थी, जिसमें जमायत इस्लामी थी, हमेशा से इन्होंने कुछ लोग अपने रखे होते थे मस्जिदों में भी, और जानबूझकर जब वहाँ पर जुम्मे की नमाज होती थी उसके बाद किस प्रकार से पथराव करना है, सिक्योरिटी फोर्सेस को किस तरह से
खराब करना है ताकि वो आगे से रिएक्शन करें और हम ये बता सकें कि कश्मीर के हालात कितने खराब है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उन्होंने कहा कि कि हम डेवलपमेंट और विकास का रास्ता चाहते हैं आज, और पहले की जब अगर अंतर देखें तो कश्मीर में आज एक विकास का दौर है। आज नौजवान खेलों की ओर बढ़ना चाहता है। आज नौजवान को आर्मी के माध्यम से दूसरे माध्यम से भारत की यात्रा के लिए लिया जाता है ताकि वो पूरा देश के बारे में जाने। आज वहां पर जिस प्रकार से टूरिज्म का एक बड़ा हब बना है और यहां तक कि ये जानबूझ करके वहां पर बेरोजगारी और दूसरी चीजों को इन्होंने पुरानी सरकारों ने रखा ताकि ये लोग इससे आगे कुछ ना सोच पाए। उसी का परिणाम है कि आज 5 साल में अगर अंतर नजर आ रहा है तो पहले क्यों नहीं नजर आता था। इसलिए साफ ये जाहिर होता है कहीं ना कहीं उन राजनीतिक पार्टियां जो इसका लाभ लेती थी, वो लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेकर के इनको गुमराह करते थे, आज कश्मीर का लोग सोचना शुरू हो गए हैं। देखिए 5 साल में जो आदमी ने हमारे लिए किया है और वाकई में अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, ये एक लोगों के ये जहन में ये बात आई। सर, युवाओं के लिए ये कितना बड़ा संदेश है कि राजनीति के अगर चक्कर में रहोगे तो इस तरीके से गुमराह किए जाओगे। आपको लगता है कि आज का युवा यह भली भांति जानता है कि कश्मीर की असली में स्थिति क्या है और राजनेता इतिहास में उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहे? देखिए हमें ये मानना पड़ेगा कि वो जो राजनेता थे या हुर्रियत थी या जमायत इस्लामी जैसे संगठन थे, वो ये जब वहां यहाँ पर इलेक्शन भी होते थे तो कुछ लोगों को मोहरा बना करके आगे करके तो वहां पर ये साथ में कह दिया जाता था कि हम इसका बाइकआउट करेंगे। और जो लोग 2000 वोट लेकर के 2500 वोट लेकर कुछ इलाकों में वोट डलवा दिए जाते थे, वो यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए बनकर के चुन करके आते थे, वही सरकारों में बैठते थे और सरकारों में बैठ करके इनके निर्णय करते थे। और वहां तक कश्मीर का उन्होंने ही यहाँ पर जो फ्यूचर है वो खराब किया था। बच्चा पैदा होता था, स्कूल उसको जाने के लिए माहौल ही नहीं होता था। मिलिटेंट्स का जनाजा निकलता था, लाखों की तादाद में वो अपील करते थे कि उनके पीछे चल पड़ते थे। रोजमर्रा का एक ऐलान होता था तो बंद हो जाते थे। आज वो चीजें पहले भी ठीक हो सकती थी और इन्होंने उन लोगों को जो हालात खराब करते थे उनको इतनी सिक्योरिटीज दे करके रखी थी, उनको सरकारें कहीं ना कहीं खुश करती थी, उनको पैसा दिया जाता था। इससे साफ जाहिर होता है कि जो आज वो धारा 370 का विरोध करते हैं, आज जो धारा 370 हटने के बाद के हालात के बारे में भी आज कश्मीर को वैसा दर्शाना चाहते हैं। आज G20 वहां पर हुआ है, वहां पर रिंग रोड्स बन रही हैं, एम्स बन रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, कश्मीर तक रेल पहुंच रही है और लोगों को वाकई में फर्क नजर आने लगा है। तो स्वाभाविक बात है कि आज खेलो इंडिया के माध्यम से या दूसरे तरीके से वहां पर बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं और नौजवानों की एक पीढ़ी इन राजनीतिक पार्टियों ने खराब की है। और 30 साल तक यहाँ पर जो मिलिटेंसी रही, जो बच्चा पैदा भी हुआ उसको ये सिखाया गया हम क्या चाहते हैं, आजादी, पाकिस्तान के झंडे चढ़ाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलो। लेकिन ठीक है, थोड़ी सख्ती भी हुई होगी, कुछ लोगों को परेशानी भी हुई होगी, लेकिन हालात सुधरे हैं और आने वाले समय में कश्मीर सबसे बड़ा एक टूरिस्ट पॉइंट दोबारा बनेगा। कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है और कश्मीर के लोग सूफियाना जो कल्चर है उसमें विश्वास रखते थे, लेकिन इनको खूनी उसमें फसादों में जो फंसा के रखा गया, ये इन सरकारों का इसमें बहुत बड़ा दोष। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। मिस्टर एसपी वैद, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम in Jammu and Kashmir. You understand, the people, you understand the topography, you understand the challenges. A lot of naysayers, a lot of detractors, they wrote off, the abrogation of Article 370. They thought that this was in fact going to make matters worse. It was the spelling of doom. But you've heard from these people. One of these gentlemen went on to say that he had 30 FIRs registered against him. He was obviously misled. He was being taken advantage of an agenda he did not understand. He did not have to rely upon an agenda that was completely precipitated by political greed.
Vinith, namaskar. I was listening to both Mudassar and Qayyum. How heartening it is, their stories. And one would be so happy to see that Mudassar is now teacher and Qayyum runs his own Sabji Ka Redi. What a change after abrogation of Article 370. And this is what a caring leader should do, and what Honorable Prime Minister's leadership, Government of India, and everyone in his team, including the Home Minister, are doing, and the Lieutenant Governor. This is what was required. And you can imagine, I have seen 2008, 9, 10, and also 2016 when I was DGP. Both era, I think lakhs of youth, their lives were spoiled. What Qayyum was mentioning, there are, I think, 30 plus FIRs against him. He was detained under PSA. Same thing Mudassar has gone through. Just imagine if there are so many FIRs against you, your career is ruined. You just can't get passport, you can't get any government employment, your career is ruined. But luckily, Qayyum has taken a private job, which is private business he's doing. How many of them, while pelting stone on army, paramilitary, and police, must have been killed? Many of them getting injured, their legs getting amputated. So many of them getting seriously hurt. I have seen many of them, and for no fault of theirs. And this is what actually has ruined their life. And all this was an industry running at the behest of our, Pakistan's proxies who were working here, taking money at their behest. In fact, popular sentiment at that time was that 500 rupees being, though Mudassar was saying that he never received money, but everyone in Kashmir knew that time that the Stone-Pelters are given 500 rupees. I recall I have worked both in Baramulla as DIG and also as DGP in 16. This bridge he was mentioning, it used to be a battleground for security forces. After Friday prayers, the mob will come in a procession, start pelting either on the army establishment or on the police and CAPF on this bridge. And many a times we had to resort to tear gas, lathi charge, and maybe if situation goes out of control, even firing. And sometimes you end up killing some young boys like him. So I think a similar situation in downtown Srinagar was Friday used to be such a big challenge for J&K police. I think thousands of my men have been injured. J&K police people, many of the paramilitary forces and army people have been injured, having had injuries and other body injuries, and apart from these boys getting hurt. So in this scenario, seeing what has happened now after 2019, it is so heartening. This is what a good leadership must do, and I think it should be an example for the whole country and whole world. Absolutely, sir. Completely agree with you. It should be. And it is very unfortunate that some people, for their vested interest, whether Hurriyat, whether I don't want to name people, they had a narrow political interest and they misled these boys. Their own children were very happily studying outside and happily enjoying life, but these poor, young, impressionable minds were misled, fed anti-India, anti-security forces, anti-army feeling, and always told them to, on Friday, come out, Stone-Pelt, you are going to get freedom, and all sorts of these things, misleading these young boys. And a generation has been, their lives have been ruined. I feel very bad about them, these boys and their families.
Yeah, you're absolutely right, sir. Let me also rope in Darakshan Adrani into this conversation. Darakshanji, if you can hear me. Are you there with us? Yeah, yeah. I can't see you. Let me, in fact, quickly rope in Mr. Kiran Vattal, Kashmiri Pandit. Mr. Vattal, if you can hear me. Yeah. Well, you know, this is not only a transformation, like Mr. Vaid said, it is a message. Yeah, it's a message transformation. which was misconstrued, a message which was misrepresented, a message which was unnecessarily politicized by people who are responsible for ruining Jammu and Kashmir. They still wanted to hold on to these crutches and show the world that whatever this government is planning and doing is not going to work. It's only been 5 years. 5 years is no time to judge any kind of a government on its show, but we have seen the spectacular results there in front of you. जय श्री राम। ये मैं कश्मीरी पंडित समाज की तरफ से ये कन्वे करना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों को, पर्टिकुलरली अपने भारत के वर्ष के, कि पिछले 4-5 साल में जो लोगों में वहां बदलाव आया, जो माहौल वहां एक पीसफुल माहौल बना, जिसकी वजह से रिकॉर्ड टूरिस्ट वहां आए, और जो लोगों का, कॉमन पीपल, उनका जो एटीट्यूड, बिकॉज कश्मीरी जितने भी हैं वो पीस लविंग है, बट एट द सेम टाइम उनको जो पाकिस्तान से रेडिकल एलिमेंट आया है, इन्फिल्ट्रेट हुआ है, और कुछ जो कश्मीर से उन्होंने ट्रेन किया है, उनके डर के माध्यम से ये पिछले इतने साल चलता रहा। और इसमें पूरा योगदान जो वहां की कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने पूरा योगदान दिया, उनको पैटर्नेज दी, और बैक पे हुर्रियत के साथ उन्होंने अपना गठजोड़ जारी रखा और कश्मीर को एक बॉइलिंग पॉइंट पे ला के रखा। हमारी खुशकिस्मती है, हमारे समाज की और हमारी बरादरी की और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की, पीस लविंग लोगों की, कि जब से ये हमारे सेंटर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं और अमित शाह जी, इनका जो अप्रोच है, जो इनकी पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर है, वो क्लियर कट है। वो अब एक एक कश्मीरी को पता लग गया है कि दे वांट बिजनेस, दे वांट पीस इन कश्मीर, दे डोंट वांट एनी हैंकी पैंकी, एनी प्रॉक्सी देयर, whether it is proxy from Pakistan or it's proxy of their Kashmir based old political party, and now another political 1998 or other political party. They all are now at the defense. So the main contribution, the people of the Kashmir, they are very peace loving and hospitality is there in their doorstep. They are not, they should not be blamed. The main blame, if you want to blame, you should blame the Kashmir-based political parties and the Hurriyat, which now at the present are on back bench, and now they are having alliance with Indian this front to have their say somewhere if something is possible. So I will give whole credit to the center and particularly LG Manoj Sinha. He's a very upright and straightforward person and people friendly also. Anyone can go and meet him, and he immediately addresses his problem. So that approach, and furthermore, the flagship programs which has been penetrated in Jammu and Kashmir, not only development, the individual flagship program, where in every rural area soul is getting benefited out of that. So now the main issue is with the government of India and this LG Mode, that our community, Kashmiri Pandits, who have been thrown out of their own homeland, from own roots,
Because, you know, we have a 5,099 years old history. Our Satmrishi calendar is 5,099 years old. And all Kashmir, up to 1339, the Kashmir last king was Kota Rani. So after that, the invader came and forcefully took Kashmir and converted the maximum, 90% of our community was converted to right. So let me also rope in Islam. Drakshan Andrani into this And conversation. this we Drakshanji, if want, you can hear me. to- Drakshanji, if you can hear me. Then they will decide. Drakshanji, if you can hear me. All right, there seems to be a problem with the connection. Mr. Ved, anything you would like to, in fact, enunciate as we end our show? You know, you've mentioned that word, that it's heartening, it's emotional to a great extent, that this change has been made possible because of the right governance. You know, if we look at another 5 years that are supposed to be, instrumental in shaping Jammu and Kashmir, what are the changes you can foresee when you compare it with the rest of the country? Vinayji, 5 years, as you said, is a very small time in the long history of our Jammu Kashmir problem, if you see, since 47. But I think this very government is likely to continue for another term, which is very, very sure. And I think if this kind of policy continues, we are going to see many more steps in this direction. The development push which Prime Minister Modi's government is doing, Amit Shah is pursuing it. It is bringing a lot of change in Kashmir Valley, and that need to be continued. That is number one. Number two, I think as Mr. Watil was mentioning, rehabilitation of Kashmiri Pandits is a very, very vital. Kashmir is incomplete without Kashmiri Pandits. True. And that, I think, one area where a lot of work needs to be done. And they need to get justice also. There are many cases of Kashmiri Pandit brutalities, the way they have been killed and raped and maimed. I think both the Honorable Supreme Court and the government need to take cognizance and recognize their genocide. That is very, very important. Third, I think since this stone pelting system now, this nexus has been broken, but what Lieutenant Governor Manoj Sinha has done a great job in identifying people sitting in the government and supporting terrorism, supporting ecosystem. I think many of them have been purged out of the government. And I think that process needs to continue. We cannot have people drawing salary from the taxpayers' money of India and working against our own nation. And plotting against India. State. Yes. So that work also needs to continue. And yes, tourism is a mainstay of Kashmir, and so many ancillary industries are connected with tourism. And all these boys like Mudassar Qiyum will get, many like them will get small jobs. Somebody driving taxi, somebody driving auto, somebody having local handicrafts, boats, houseboats, and all sorts of activities connected with tourism. I think that we must give a push simultaneously with our development push. Absolutely right. So you've made some stellar points, and it's amazing to see this kind of a progress. It's a significant. It's not only filled with promise. It's also filled with the fact that the confidence that the people of Jammu and Kashmir, showed to this government has finally paid off. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.